आज का लेक्चर जो है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, ठीक है. एंड दिस विल बी द दिस विल बी द लेक्चर फॉर द लास्ट एक्सरसाइज. सो वी हैव एक्सरसाइज 5.8. and 5.8 means the first thing we have to see, that is the Rolle's theorem. So it will be Rolle's theorem. So full now it was Michel Rolle, French mathematician Michel Rolle. Bas kara second and kar godnethy present here. You see present shape of the Rolle's theorem. It was presented in 12th century by the Indian mathematician Bhaskara II. But then in 17th century, in fact, it was presented by Rolle's, Michel Rolle. He was a French mathematician. Magar aim bro you see Rolle's theorem, it was only presented by Rolle for the polynomials. Polynomial khatre this theorem, but then it was extended to any function. So to be more precise, jab cheez karan ye theorem kim khatre use, we use this for polynomial functions. So the statement of the Rolle's theorem goes like this. So we have a function, let f be a function from ab to r. So ab to r, so we choose here the specific domain, that is the closed interval. Closed interval. So f is a function from ab to r. Yadan chine sorry real number nyamakin, we take the subset of real numbers as the domain. So in fact, agar subset of domain is as the subset of domain is as domain set, या subset of real numbers as domain set, then that function is called a real valued function. So in fact, f is a real valued function. So f is a function from ab to set of real numbers. Defined by any agar a function defined from ab to r as it would, such that satisfies the given conditions. A function from closed interval ab to r, a closed interval ab क्या से बनाएंगे, domain set, and range set is set of all real numbers. So we have a function which satisfies the following properties. Number first, you see function f, it will be continuous in closed interval a b. So f is continuous for every point in closed interval a b, means f is continuous for every point within it is domain. यानी domain के इस point खतर आसी function continuous. domain के इस point खतर आसी continuous. And number second, f is differentiable in open interval a b. ऊपर है closed interval and here we have open interval. f is differentiable in AB. Differentiable in AB means open interval AB. यानी end pointers are excluded. ये end point पे image differentiability is check करें. So first condition, f has to be continuous on the closed interval AB. Second condition, f has to be differentiable in open interval AB. And third condition, f of A is equal to f of B. What does this mean? F of A is equal to f of B. F of A means image of A. What is A? A is the starting point of the interval. In a starting point use interval, that is f, any image. F of A is equal to f of B. F of A is equal to f of B. This means image of A is equal to image of B. Yani A is use y value as sugas asun B kes y value as barabar. So f of A is equal to f of B. So under these three conditions, agar a function is it point ki ya trinmay condition is satisfy kara. So such that f is continuous in closed interval AB, it is differentiable in open interval AB, and f of A is equal to f of B. Till conclusion Rolle's theorem. So Rolle's theorem in conclusion then there will exist a point C, a point C exist in open interval AB. In open interval AB such that at that point f dash of C is equal to 0. And a tough point is derivative at that very point will be equal to 0. So we have the statement of the Rolle's theorem like this. Agar iska function which satisfies all the three conditions. What are the three conditions? Number first, it is continuous in closed interval AB. Number second, it is differentiable in open interval AB. Number third, f of A is equal to f of B. Agar hum trinmay condition kar a function satisfy till then the conclusion is there. Conclusion chahiye ki till hako is kam a point C in open interval AB such that at that point f dash of C is equal to 0. So agar isi wucho this statement seems to be some sort of unexplained unless we
see the geometrical meaning or geometrical interpretation of these statements. ठीक है, इस टाइम में geometrical sense में वुचो कि what does this actually say, इस टाइम में बासान it remains unexplained. इस टाइम में geometrical meaning या geometrical interpretation या theorem वुचो. ठीक है, now geometrically we have to see what does these statements mean. ठीक है, geometrically them statement अनु मतलब क्या है. ठीक है, so number first f is a function from a b to r defined by. ठीक है, सो अगर f कह कि फंक्शन यानी कोडोमेन सिस्टमस में फंक्शन. सो हियर वी हैव ए बी एज अवर डोमेन एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द रेंज. ठीक है, सच दैट अगर इस गोडन्युक स्टेटमेंट वुचो व्हाट डज दिस जियोमेट्रिकली मीन. So f is continuous in AB. F is continuous in AB. यानी अगर इस ग्राफ थ्रो अत फंक्शन isn't it? This is our x axis and this is our y axis. X axis and y axis. X axis and y axis. So x axis and y axis. Isn't it point A and say this is point B. ठीक है, point A and point B. Point A and point B. समझ आया हुआ? Isn't it point A to be point B? Isn't it? It may be anywhere. It may be A may be here. B may be there. They may be anywhere on the x axis. Isn't it point A? Isn't it point B? ठीक है, f जो function defined over this interval A B. A पर B is defined. समझ आया हुआ? ठीक है, इन पर गोडनिच कंडीशन f is continuous in closed interval AB. What does this mean? f which अगर इस function f is function image अगर इस graph त्राओ कट पेट a पेट b s ताई that will be continuous. ठीक है, यानी that won't have any jumps, that won't have any breaks. ठीक है, यानी a पेट b s ताई use this graph by so is continuous. ठीक है, suppose इस person त्राओ इस graph. इस person त्राओ इस graph. ज़रूरी नहीं कि इस त्राओ इधर पेट graph. We can have a graph like this. We can have a graph like this. कुंती डायरेक्शन में है कोई सा ग्राफ त्रे. ठीक है, फंक्शन है कुंती डायरेक्शन में ग्राफ. मगर कंडीशन क्या है? if f is continuous यानी a पेट b s तान यिल तेज ग्राफ त्राओ that has to be continuous. तथ मज गसन ब्रेक्स आसन केन यानी सु ग्राफ त्रावन गसन एक्सपेंड थोद प्यून तोलन केन. ठीक है, सो a पेट b s तान यिल तेज ग्राफ त्राओ तेल क्या गस आसन that has to be a continuous graph. ठीक है, सो अगर ये point H what will be this point? This will be image of A. What will be this called? f of A. ठीक है, f of A. अगर ये point B what will be this point? f of B. So this will be f of B. ठीक है, गोडनिच कंडीशन कि A पेट B s तान युस ये ग्राफ it should be continuous. ठीक है, a पेट b s अगर इस ग्राफ त्राओ this has to be continuous. and number second f is differentiable in AB. differentiable means इस पर already पता है dy by dx means slope of tangent. So geometrically dy by dx means slope of tangent to the function y is equal to f of x. Slope of tangent यानी tangent हेको इस तरह टिम tangent slope हेको इस खड़े. ठीक है, we can draw tangents and we will be able to find the slopes of the tangents. ठीक है, so दोयम condition क्या है तिल वना? f is differentiable in AB. f is differentiable in AB means a पेट b s ताइन in excluding a and b यानी a ते b वगैरह use the point आइस whatever point we take a पेट b s ताइन use this point निमो ताथ point इस पेट क्या है कोई स्ट्रेट टेंजेंट तिम टेंजेंट स्लोप है को कंप्यूट करे. ठीक है, तिम टेंजेंट स्लोप है को कंप्यूट करे. ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन नाउ? a पेट b s ताइन त्राओ है को इस तरह कंटिन्यूअस ग्राफ. ठीक है, नंबर सेकंड f is differentiable in AB means a तो b वगैरह है को इस प्रात एक इस पॉइंट इस पेट क्या तरह tangent. ठीक है, so it is possible to draw tangent at every point excluding a and b and we will be able to find the slope of that very tangent. ठीक है, यानी a पेट b s ताइन a तो b s मंजबाग यम पॉइंट्स इन तमन पॉइंट पे क्या है को इस तरह टेंजेंट तिम टेंजेंट एक स्लोप. सो देयर विल बी टेंजेंट इजंट सपोज पॉइंट या पॉइंट पे है कोई सा टेंजेंट थ्री तिम टेंजेंट स्लोप है को कंप्यूट करे. इज इट ओके? समझ आया वहाँ? ठीक है, सो f इज डिफरेंशिएबल इन AB means a पेट b s तान use the point आइस तथ पॉइंट पे है कोई सा tangent त्रित and slope of that tangent can be computed. and त्रीम कंडीशन क्या है?
f of a is equal to f of b. What does this mean? f of a to be f of b as पानवे बराबर, यानी f of a यस वैल्यू आस y वैल्यू आस सो आस क्या, सो आस कत बराबर b s बाय, यानी y कोऑर्डिनेट आस f of a बराबर कत f of b s. समझ आया f of a is equal to f of b. ठीक है, यानी अगर ये फंक्शन इत पॉइंट कि a पे b s तान आस कंटिन्यूअस ग्राफ, a पे b s तान युस ते पॉइंट आस तथ पॉइंटस पे हेको क्या प्रथ अकिस पॉइंटस पे हेको टेंजेंट त्रयित एंड एज तो बी बीच इमेज नीरान सेम. ठीक है, एज तो बी बीच इमेज नीरान सेम. देन द रोल्स थ्योरम यम कंडीशन अगर हम त्रिनवे गए सेटिस्फाई, देन द कंक्लूजन ऑफ द रोल्स थ्योरम गोज लाइक दिस. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए बी, यानी कम अज कम पॉइंट सी ए बी यस मज एग्जिस्ट गसान, कम अज कम पॉइंट कत मज ए बी यस मज एग्जिस्ट गसान सच दैट तथ पॉइंटस पे आस क्या एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. अब देखिए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 यानी अस वन कम अज कम ए पे बी यस तान कम अज कम ए पे बी यस तान पॉइंट सी एग्जिस्ट गसान. ठीक है, यह जरूरी कहें सी आस यत मंजबाग, इट मे बी हियर बट इट मे बी विद इन द इंटरवल ए बी, इट मे बी विद इन द इंटरवल ए बी सच दैट अत पॉइंटस पे क्या है f dash of c is equal to 0. f dash of c is equal to 0. What do we mean by f dash of c is equal to 0? Mean f dash of x. f dash of x means slope of tangent to f dash of x means slope of tangent. f dash of x means slope of tangent to the function f of x. ठीक है, मगर ये क्या वना f dash of c means slope of tangent at point c, slope of tangent at point c. ठीक है, slope of tangent at point c समझ आया वहाँ. f dash of c means slope of tangent at point c, यानी c सो पॉइंट यथ पॉइंटस पे क्या अगर त्रो टेंजेंट तम टेंजेंटुक स्लोप. ठीक है, तम टेंजेंटुक स्लोप कत बराबर आस 0 बराबर, तम टेंजेंटुक स्लोप आस 0 बराबर, वुकिम टेंजेंटुक स्लोप आस 0 बराबर. देखिए अगर इस सपोज x एक्सिस, इस x एक्सिस. ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है, अख लाइन वुचन अक लाइन हुन स्लोप क्या. ठीक है, इस सपोज इत पे अख लाइन, अम लाइन हुन स्लोप वुचन से व्हाट विल बी द स्लोप. It will be angle of inclination. Angle of inclination with this line makes with the positive direction of the x axis. यानी you see angle इम एंगलो क्या tangent value. ठीक है, इम एंगलो tangent value. So m is equal to tan of theta. Slope क्या गो tan theta. Slope of this line will be tan theta. यानी ये कुता एंगल से बना x axis से तम एंगलो tangent value. That will be m is equal to tan of theta. ठीक है, ये लाइन कूता एंगल बनाए with the positive direction of the x axis, तम एंगलो tangent value that will be called slope. So that is slope. ठीक है, slope. So इस लाइन. ठीक है, ये कूता एंगल बनाए से दिस मार्क इज a line. ये कूता एंगल बनाए ये लाइन. ठीक है, अगर वो वुचो ये लाइन, अगर ये लाइन गसा कोइंसाइड विद द x एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एंगल. सो m इज इक्वल टू एंगल कूता बनाइए 0 डिग्री. सो m इज इक्वल टू tan of 0 डिग्री एंड tan 0 इज 0. ठीक है, यानी युस x एक्सिस x एक्सिस स्लोप क्या 0, x एक्सिस स्लोप 0, x एक्सिस स्लोप 0. ठीक है, एंड वी आल्सो नो अगर कह जो लाइन लाइन ब्या लाइन सच दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, वी नो पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप्स. सेम स्लोप्स. ठीक है, अगर जो लाइन पैरेलल तेल लाजमन तिहुंद स्लोप इक्वल. पैरेलल लाइन्स हैव सेम इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड conversely if the slopes are equal then the lines are parallel. ठीक है, now f dash of c is equal to 0 means slope of tangent. यानी c अगर अख पॉइंट तथ पॉइंटस पे अगर क्या त्रो टेंजेंट तम टेंजेंट स्लोप क्या 0, तम टेंजेंट स्लोप 0. अस वुच मगर x एक्सिस स्लोप कत बराबर 0 बराबर, x एक्सिस स्लोप क्या 0 बराबर. ठीक है, यानी अगर x एक्सिस स्लोप कत बराबर 0 बराबर. ठीक है, यम लाइन यानी f डैश यथ पॉइंटस पे यानी अगर ये पॉइंट c सच दैट से दिस इज पॉइंट c. अथ पॉइंटस पे अगर इमेज वुचो दिस विल बी f of c. ठीक है, f of c चाहिए. अथ पॉइंटस पे अगर क्या त्रो टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट व्हाट विल बी दैट
f dash of c ठीक है यानी यम टेंजेंटुक अगर इस टेंजेंटुक त्रो इन टेंजेंटुक अगर स्लोप वुचो दैट विल बी f dash of c at point c the slope of tangent at point c that will be f dash of c समझ आया f dash of c means टेंजेंट त्रान कत पे सी एस पे तम टेंजेंटुक स्लोप ठीक है यह पॉइंट f of c अत पे क्या टेंजेंट तम टेंजेंटुक स्लोप मगर सह टेंजेंट तम टेंजेंटुक स्लोप कत बराबर 0 बराबर ठीक है बट स्लोप ऑफ x एक्सिस इज आल्सो इक्वल टू 0 ये x एक्सिस स्लोप ति 0 f डैश यानी सी एस पे f of c अत पॉइंटस पे ति क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 व्हाट डज दिस मीन x axis to be use your line these are parallel because parallel lines have same slopes that means कि use your line use your point c ये point c ये point at point पे अगर इस क्या त्राओ tangent so tangent क्या that is parallel to x axis ठीक है so this is what actually the Rolle's theorem means ठीक है so अगर इस if we sum up all the things so if we have geometrically or the geometrical interpretation of the Rolle's theorem goes like this if we have a function f such that is continuous in open interval a b which means अच्छी function is की a पे b ताइन graph हेकान त्रोइट as a continuous graph without breaks without jumps a पे b ताइन हेको continuous graph number second f is differentiable in open interval a b यानी a पे b ताइन युस ते पॉइंट आइस तथ पॉइंटस पे क्या हेको त्रोइट तथ पॉइंटस पे हेको त्रोइट टेंजेंट तथ पॉइंटस पे हेको त्रोइट टेंजेंट तम टेंजेंट हेको स्लोप कंप्यूट करित एंड नंबर थर्ड f of a is equal to f of b simply h to b बीच इमेज क्या नेरान सेम h to b बीच इमेज नेरान सेम तिल छ वना कंक्लूजन कम अज कम अख पॉइंट एग्जिस्ट गसान अत ओपन इंटरवल यानी a पे b s ना अख पॉइंट युत एग्जिस्ट गसान ठीक छ अख पॉइंट c एग्जिस्ट गसान सच दैट तथ पॉइंटस पे अगर क्या त्राओ टेंजेंट तथ पॉइंटस पे अगर त्राओ टेंजेंट सो टेंजेंट क्या तम टेंजेंट स्लोप कत बराबर 0 बराबर बट स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 बराबर यानी सो टेंजेंट पैरेलल कत x axis and conclusion one is then there exists a point c such that at that point the slope the tangent is parallel to x axis at that point the tangent is parallel to x axis ठीक है b कर we revise so the Rolle's theorem is one if we have a function defined over a closed interval a b and domain in the range is set of real numbers मगर so function guys satisfy करें यूम त्रे conditions what are the conditions f is continuous in open interval a b मतलब a पे b ताइन गसो continuous graph हेकन त्रोइथ number second a पे b ताइन f is differentiable in open interval a b means a पे b ताइन युस ते अख पॉइंट आइस तथ पॉइंटस पे हेको गसो हेकन टेंजेंट त्रोइथ तम टेंजेंट स्लोप गसो हेकन कंप्यूट करित ठीक है differentiable means slope of tangent at every point of the function and f of a is equal to f of b means इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू इमेज ऑफ बी ठीक है अगर उन त्रे कंडीशन त्रिनवे कंडीशन गसन सेटिस्फाई गसन अगर उमो त्रियो कंडीशनों मज कंडीशन गई ना फेल तिल हेको वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम द Rolle's theorem अप्लाई करने खातिर या Rolle's theorem मज युस ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करने खातिर जरूरी कि हम त्रिनवे कंडीशन गसन सेटिस्फाई गसन ठीक है अगर हम त्रिनवे कंडीशन गई सेटिस्फाई तिल वन कि हेको ए पे बी ताइन हेको क्या लाजमन अख पॉइंट c छणित सच दैट तथ पॉइंटस पे अगर क्या त्राओ टेंजेंट द टेंजेंट एट पॉइंट c विल बी पैरेलल टू x एक्सिस ठीक है f dash of c is equal to 0 बट दैट मीन्स कि युस सो पॉइंट आ c तथ पॉइंटस पे अगर टेंजेंट त्राओ दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x axis the tangent at point c will be parallel to x axis ठीक है so in fact this type of theorem this is called existence theorem ठीक है यानी ऐसी करा क्या अगर इस त्रे कंडीशंस गसन satisfy तिल वनो there exists a point c so there exists a point c so this guarantees the existence of point यानी अख पॉइंट आस अत मज ठीक है मगर सो पॉइंट कित पे करो कंप्यूट सो पॉइंट कुस आस तथ मुतलिक Rolle's theorem it does not lay any emphasis on that ठीक है सो यथ मज सिर्फ आस क्या it guarantees the existence of point but
how do we compute that point या सु point kus आइस तथ pointus मुतलिक छन Rolle's theorem वना केन ठीक छा so these type of terms are called the existence terms यात मज क्या यात मज simply the emphasis is on the existence of a point and we do not actually know how to compute that point and what that point will be ठीक छा समझ आया ठीक छा आप लिखिए अब statement now can you predict its converse तो हेकवा वनी एमु converse क्या आइस what will be its converse शाबाश अस क्या वोन Rolle's theorem मज गसन गोडनेथै यम त्रे conditions गसन satisfy गसनी ठीक छा all the three conditions have to be satisfied and if all the three conditions are satisfied only then we will be able to find at least one point in open interval AB such that f dash of c is equal to 0 ठीक छा यानी यम त्रे conditions क्या करन यम त्रे conditions छ करा imply f dash of c is equal to 0 now what will be converse if f dash of c is equal to 0 exactly til gasan here mit trinway condition satisfy gasan ठीक छा so converse of the Rolle's theorem goes like this if we have a function f from a b to r such that f dash of c is equal to 0 then the function has to be continuous it has to be differentiable and f of a is equal to f of b ठीक छा so this will be converse of the Rolle's theorem now if we have suppose isomorphism statement then there exists at least one point c belonging to open interval a b यानी कम से कम at least one point now I खो ज़्यादा point हेकन exist गसित कम से कम गस अख point exist गसन ठीक छा so as an suppose say if we have again a function a to b defined from suppose a to b per zanchi defined ठीक छा suppose it has a graph like this ठीक छा अश वना तेल such that is an त्रिनवे condition satisfy करा f of a तो भी f of b ति बराबर ठीक छा यत पे योर तान continuous graph प्रत कुन पॉइंटस पे हेको अस क्या अख tangent त्रयित and we will be able to compute the slope of the tangent of at every point now अस क्या वना कम से कम अख point exist गसन such that तथ पॉइंटस पे अगर इस क्या त्राओ टेंजेंट सो टेंजेंट आइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक छा या पॉइंटस पे अगर इस टेंजेंट त्राओ इसन त्राओ टेंजेंट ये टेंजेंट छा बासा पैरेलल टू एक्स एक्सिस छना दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑल्दो दिस इज नॉट टू द स्केल ठीक छा बट यू हैव टू अंडरस्टूड कि यू सी लाइन छे इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक छा एते पर छी कि यतन है कोई ब्याक पॉइंट छणित यतन क्या आइस यतन ये टेंजेंट आइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगेन अगर इस यथ पॉइंटस पे वुचो यथ पॉइंटस पे हेको अख टेंजेंट त्रयित सो टेंजेंट आइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक छा सो सिंपली वनान Rolle's theorem कि अगर अस फंक्शन आइस such that f is continuous f is differentiable ठीक छा and f of a is equal to f of b तिल हेको कम से कम अख पॉइंट छणित such that तथ पॉइंटस पे अगर क्या त्राओ टेंजेंट सो टेंजेंट आइस पैरेलल टू x axis so this is the statement of the Rolle's theorem ठीक छा ना exactly थोड़ा बहुत अथ statement सहित रिलेव ना so exactly इसी statement जैसा एक और statement that is the mean value theorem ठीक छा so that is mean value theorem so in fact mean value theorem in fact this is also called Lagrange's mean value theorem so Lagrange's mean value theorem again Joseph Louis Lagrange was a mathematician ठीक है who proposed this term Joseph Louis Lagrange ठीक है so Lagrange's theorem so you see mean value theorem it is also called as first mean value theorem in fact we have another mean value theorem that's called Cauchy mean value theorem that is called second mean value theorem ठीक है that is Cauchy's mean value theorem so that is called second mean value theorem but here we have to discuss only the first mean value theorem which is called Lagrange's mean value theorem ठीक है so exactly this statement is put as Rolle's theorem in fact this is Lagrange's mean value theorem it is said to be the extension of the Rolle's theorem ठीक है so यथ मज क्या mean value theorem the statement goes like this if f is a function from a b to r ठीक है such that ये condition भी satisfy करा f is continuous in closed interval a b this will be first condition and geometrically means
कि a पेट b तान हेको अस कंटिन्यूअस ग्राफ त्रित नंबर सेकंड f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b मीन्स जियोमेट्रिकली कि अस हेको a पेट b तान युस ति पॉइंट छ तथ पॉइंटस पे हेको अस टेंजेंट त्रित एंड ठीक छ ये f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b युस छ ये कंडीशन छ ये मीन वैल्यू थ्योरम मज आमज ड्रॉप करना ठीक छ सो ये त्रीम कंडीशन छ ये कि दैट मीन्स वी ओनली नीड two conditions in the mean value theorem ठीक है so statement is conclusion sheet wana til so statement is only this f is continuous in ab f is differentiable in open interval ab then the conclusion is here so then there exists at least one c belonging to open interval ab ठीक है then there exists at least one C belonging to open यानी point is A B is must size that that point is paired as f dash of C is equal to ठीक है f dash of C means slope of tangent at point C is equal to that is equal to f of B minus f of A divided by B minus A divided by B minus A ठीक है so again f dash of C is equal to f of B minus f of a divided by b minus a ठीक है b minus a so b which is अगर इस पर करो समझने की कोशिश this will be much hard to remember तीस टाइम्स image जुस the existence that is incomplete this टाइम्स ने geometrical form image वुचो कहीं ठीक है so geometrical form में हम ज़्यादा असल पर समझो So देखिए what does this actually geometrically mean? So I वन b f is continuous in a b यानी a पेट b तान continuous graph हेको त्रित a पेट b तान हेको continuous graph त्रित number second f is differentiable in a b यानी a पेट b तान युस ति पॉइंट तथ पॉइंटस पे हेको टेंजेंट त्रित ठीक है say if we have a graph like this ठीक है if person say it is like this it is a graph like this it much three condition f of a is equal to f of b छने कहीं यानी a तो b b is a f of a अलग असित f of b है कि अलग असित ठीक है so this is f of a this is f of a and this is f of b ठीक है वजन वुचो इस ये point what will be this point ये point coordinates जन वुचो इस x value क्या है a ठीक है ये point x value है a what will be y coordinate f of a y coordinates ना f of a so it will be f of a so it will be a f of a ठीक है ये point जन छी b what are its y coordinates f of b so it will be b f of b ठीक है f of b ना y युक value image ठीक है so this will be like this f of b this will be f of b now अस क्या वनान अस जन suppose ये point ये जन करो join ये point यम जो point जन करो join by means of a line ठीक है say this is line ठीक है we know as in suppose curve is कहाँ जो point is करा join by means of a straight line what is that called a secant so this line will be called secant so this will be secant so you see a line chitil a f of a to be b f of b this is in fact a secant this is a secant joining a f of a and b f of b ठीक है we know slope of a line joining two points in two point form slope of a line joining two points isn't suppose a line ये में coordinate end point is x1 y1 and x2 y2 what is slope of this line m is equal to ठीक है y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ठीक है यानी slope of a line joining two pointers is equal to difference of the ordinates divided by difference of the abscissa ठीक है y2 यानी y coordinate छे पान में करा हेर कन subtract divides में करा क्या x coordinate पान में subtract so here we have a line joining a f of a and b f of b ठीक है इस पर छी line ठीक है so it will be a f of a and we have b f of b a f of a and b f of b what will be its slope y coordinate करो subtract x coordinate करो subtract so it will be y coordinate यानी f of b minus f of b minus f of a divided by b minus a ठीक है so actually use f of b minus f of a divided by b minus a यानी this is exactly the slope of the secant this is in fact slope of the secant joining
joining a f of a and b f of b. ठीक है, यानी f of b minus f of a divided by b minus a, it is slope of the secant line joining the end points a f of a and b f of b. ठीक है, so this line a f of a and b f of b you see join ch karmuz emek yus slope ch bana, that is f of b minus f of a divided by b minus a. Now we have f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. What does this mean? F dash of c means slope of tangent at point c. Slope of tangent at point c, यानी कम से कम च अख point c युथ exist गसान. ठीक है, suppose यतन जन च सो point c. ठीक है, c च कम से कम अख point युथ exist गसान such that तथ points पे अगर इस क्या त्राओ tangent, तम tangent slope आइस बराबर कथ slope of the secant. And what is secant? Secant is obtained by joining a f of a and b f of b. We know ये line to be ये line, यानी tangent is parallel to secant. Tangent is parallel to secant. Guys, because they have equal slopes. Slopes of parallel lines are equal. ठीक है, अगर जो line आसन parallel तो slope is equal. F dash of c means slope of tangent at point c. F dash of c means slope of tangent at point c, and f of b minus f of a divided by b minus a is slope of the secant line joining a f of a and b f of b. समझ आया? ठीक है, so this is the geometrical interpretation of the mean value theorem, the Lagrange's mean value theorem. ठीक है, so I show ना till Lagrange's mean value theorem चेस वना if f is continuous in closed interval a b, यानी a पेड b इस ना अगर इसे कोई continuous graph त्रेयत, f is differentiable in a पेड b इस ना है कोई प्रात एक इस point इस अक tangent त्रेयत, तिल चेस वना अक point कम से कम इस अक point c exist गसान तथ point इस पेड अगर इस क्या त्राओ tangent, so tangent is parallel कथ secant line, मगर सो secant line किस पर गए हासिल joining the two end points of the graph a f of a and b f of b. ठीक है, यानी slope of the tangent line is equal to slope of the secant line. या वन in other words we can say tangent at point c is parallel to the secant at the end points a f of a and b f of b. ठीक है, so this is the Lagrange's mean value theorem. ठीक है, so write down the statement.